Hi guys, welcome back to another video of Doc Talk. I am Dr. Nirmal and the topic of discussion that we are going to do today is important topic series, and the subject we are going to today is general pathology. So let's start. So in general pathology, the first topic we are going to discuss is cell adaptation. Now in cell adaptation, you have to remember few things. For example, you should know the reversible injuries. Okay. Then you should know about irreversible injuries. Now in reversible injuries, there is adaptations. Okay. Basically, these all are under cell adaptation. In reversible injury, you should know about different type of reversible injuries, the causes of reversible injuries, and in irreversible injuries you should know about necrosis, apoptosis, pigments and dyes. Now necrosis has 5 different types. In apoptosis you should know the difference between necrosis and apoptosis. There are 2 more things other than necrosis and apoptosis, that is pigments and dyes. We should know about all the pigments which is present in cell either naturally or abnormally, or we should know about the dyes which we use to clarify, to visualize the pigments. Okay, so in cell adaptation unit we should know about reversible injuries, irreversible injuries. Okay, then if we move further, in inflammation we should know about the events at cell level. ओके, अब इन्फ्लेमेशन एक पूरा टॉपिक है, उसके अंदर भी जो इवेंट्स हैं सेलुलर लेवल पे वी शुड नो अबाउट देम. देन वी शुड नो अबाउट द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स. बहुत सारे मीडिएटर्स हैं डिफरेंट टाइप के, वी शुड नो अबाउट देम. जो प्री फॉर्म्ड होते हैं और जो सिंथेसाइज होते हैं आफ्टर इन्फ्लेमेशन, उनके बारे में पता होना चाहिए. देन वी शुड नो अबाउट एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. ओके, एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन 2 डिफरेंट टाइप की इन्फ्लेमेशन होती हैं. एक्यूट में जो सेल प्रेजेंट होते हैं या क्रॉनिक में जो सेल प्रेजेंट, उनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए. टाइप्स ऑफ जो होती हैं इन्फ्लेमेशन इन क्रॉनिक वी शुड नो अबाउट देम. जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं डिफरेंट इन्फ्लेमेशन के वी शुड नो अबाउट देम. सो बेसिकली इन्फ्लेमेशन भी एक मस्ट टू डू टॉपिक है. बेसिकली जनरल पैथोलॉजी ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता. Okay, then if we come to immunity में we should know about NK cells. Okay, then we should know about T cells and B cells. अब जब मैं बोलता हूँ we should know about NK, T cell और B cell, we should know each and everything. इनके markers, इनके pan markers, इनका काम, इनका mechanism of actions, इनकी development कहाँ से होती है, इनका origin कहाँ से होता है. We should know about each and everything about NK cell, T cell and B cell. Then we should know about the types of hypersensitivity, and the most important is examples of different types of hypersensitivity. We should know about that too. Then we should know about APCs, which is antigen presenting cells, the mechanism how they present the pathogens. Okay, then we should know about the MHCs. Okay, how we use MHCs in graft वगैरह में ये सब पता होना चाहिए. Then a very important topic is amyloidosis, the example of amyloidosis, the findings in amyloidosis, each and everything about amyloidosis we should know. Then there is something as thrombosis, infarct and septic shock, which we should know in the immunity part or basically in the general pathology part. Okay, I guess that's with the immunity. Then if we come to neoplasia, in neoplasia we should know about proto-oncogenes. Then we should know about tumor markers and oncogenes. Now there are 3 things. One is proto-oncogenes. It is separate. Okay, it's not like tumor marker. It's different. We should know about proto-oncogenes. Then we should know about tumor markers. Okay, now there are different types of tumor marker. There are different type of proto-oncogenes, and then there are a totally different oncogenes. Okay, now oncogenes, carcinogens are synonymous. We should know about them too. Okay, if we go for another thing, we should know about Human Genome Project. Now it's a very miscellaneous kind of a topic, but very important topic here. Human Genome Project, ये कहीं जगह पे repeats होता है. For example PSM, for example biochemistry, for example pathology. Okay, then we should know about fish technique and microarray. अब ये भी रिपीट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोबायोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजी, फिश टेक्निक, माइक्रोएरे. ओके, सो बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए इन द न्यूप्लेजिया. अब कल न्यूप्लेजिया के बारे में हम सिस्टमिक पैथोलॉजी में बात करेंगे. दिस इज जनरल पैथोलॉजी. ओके, देन इफ वी मूव फर्दर, देन वी हैव हेमेटोलॉजी. नाउ हेमेटोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल पैथोलॉजी. इसमें हमारे 3 सेक्शंस होते हैं. WBC डिसऑर्डर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट.
Then the RBC disorder, okay, they are important. Then platelet disorder, hardly few questions come from there, but जो आते हैं वो भी बहुत specific होते हैं. So first of all, if we go for WBC disorders, okay, then we should know about ALL, AML, CLL, CML. ये चार चीजें हैं, इनके बीच में डिफरेंस, आपस में डिफरेंस, और इनके मार्कर्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए. ALL, AML, CLL, CML, इनकी एजेस रेंज अलग अलग होती है कि CLL किन में कॉमन होता है, ALL किन में कॉमन होता है, और इनमें से एक है ऐसा जो रेडियोलॉजी के वजह से नहीं होता, जो रेडिएशन इंड्यूस्ड नहीं होता. आप मुझे बताना कमेंट्स में वो कौन सा होता है. ALL, AML, CLL, CML में से एक, इनमें से एक टॉप ऑप्शन ऐसा है जो रेडिएशन इंड्यूस्ड नहीं होता. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. देन वी शुड नो अबाउट CD मार्कर्स ऑफ द WBCs. ओके, इस WBC में भी डिफरेंट सेल्स होते हैं, उनके CD मार्कर्स पता होना चाहिए. देन वी शुड नो अबाउट बर्किट्स लिम्फोमा. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. द क्लिनिकल सिनेरियो बर्किट्स लिम्फोमा का अच्छे से आना चाहिए, ये मेडिसिन में भी आएगा. Then we should know about Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma. ओके, अब Hodgkin's non-Hodgkin's में भी आपस में पता होना चाहिए. Hodgkin's में भी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन RS सेल होता है, उसके अलावा भी लैक्यूनर, पॉपकॉर्न, डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए. नॉन हॉजकिन में डिफरेंट टाइप के लिम्फोमा होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए. सो इन सब चीज़ों के बारे में हमें WBC की तरफ से पता होना चाहिए. देन अगर हम RBC में आ जाएं, देन वी शुड नो अबाउट हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस. ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इजीली किया जा सकता है. देन वी शुड नो अबाउट G6PD, सिकल सेल अनीमिया, थैलासीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. नाउ हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस, G6PD, सिकल सेल अनीमिया इज मोस्ट ऑफ पैथोलॉजी थिंग, बट थैलासीमिया पीडियाट्रिक्स में भी आता है. आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ऑब्स एंड गायनी में भी आता है. सो ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेट होने के चांसेस रहते हैं, तो आप इनको इंटीग्रेटेडली पढ़िए क्योंकि एग्जाम तो इंटीग्रेटेड ही आएगा. देन कम्स द प्लेटलेट्स. अब प्लेटलेट्स में हम एक ही चीज पे वेटेज देंगे, दैट इज इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियाज. वी शुड नो अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियाज. Now, if we compare systemic with general pathology, of course, general pathology is more important than systemic pathology. But concept-wise, if we go, systemic pathology should be thorough with, you should be thorough with systemic pathology to know the medicine. Okay, so let's start with the systemic pathology. Now, if we come to CVS, now you will see here that most of the topics that I am saying is somewhere similar to the topics I have already studied in the medicine part. Now, in CVS, we should know about vasculitis, pathology. Okay, vasculitis तो पता होना चाहिए, पर उसकी pathology पता होना चाहिए. Then we should know about MI, again, pathology. MI पता होना चाहिए, but pathology wise. Then the vegetations and the cardiomyopathies. If we come to lungs, we have ARDS, then we have pneumoconiosis and CLM. Now, these are broad topics. I'm not going into the deep because I have told you all the topic in the medicine part. I'm here just giving the systemic pathology briefing. So, ARDS, pneumoconiosis and CLM. Now, ARDS is an individual topic, that's all. But pneumoconiosis have a lot of differential topics in the main topic of pneumoconiosis. And then CLM is a CLM. We should know the pathology of CLM, the types of CLM. Okay, be it squamous cell or the other types or the large cell, small cell. Okay, you all know those. Okay, if you don't know, you should know. Okay, so CLM, pneumoconiosis and ARDS. Okay, so if we come to GIT, now GIT in pathology has a long list of topics, because in medicine part we don't see much of GIT because GIT is a surgical thing. So if we come to GIT, we have Barrett's. Now Barrett's is a very, very important thing. We should know the types of adaptation happening here, metaplasia which is going to happen there, what type of metaplasia is this, which kind of carcinoma it's gonna cause, it's gonna predispose to. Okay, we should know about that in pathology part. We should know about celiac sprue, the pathological findings of celiac sprue. We should know about esophagitis, the causes of esophagitis, the treatment of esophagitis, somewhat treatment of esophagitis, and we should know the pathology of esophagitis. Then we should know about CA esophagus, again the pathology part. We should know about Whipple disease. We should know about CA stomach, again pathology why CA stomach should be known, and then the surgery will take the rest of the part of the CA stomach. Then we should know about peptic ulcer, gastritis. Now in peptic ulcers, we have type of peptic ulcers, we have causes of peptic ulcers, we should know about them. Then we have inflammatory bowel disease. Everybody know that there are two diseases inside the inflammatory bowel disease, that is ulcerative colitis and Crohn's disease. We should know a proper difference between both these diseases. Then we come to
Renal is also very important in pathology aspects. We should know about Alport's syndrome. Okay, Alport syndrome also has so many integrated subjects. It comes in surgery, it comes in pathology, it comes in medicine, it comes in pediatrics. Okay, we should know about Alport syndrome. Even it comes sometimes in biochemistry. Then we should know about glomerular nephritis. Glomerular nephritis is very, very important from the pathology point of view. There are n number of glomerular nephritis, and we should know each and every glomerular nephritis according to their pathologies. Then we should know about IgA nephropathy, specifically inside the glomerular nephritis broad topic. IgA nephropathy अच्छे से पता होना चाहिए. Then we have pyelonephritis, which is a kind of infection of the kidney. We should know about that. We should know about hydronephrosis. लिखा नहीं है but पता होना चाहिए. कुछ चीज़ें तो खुद से भी पता होना चाहिए जो नहीं बता रहा हूँ. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया, ये वो टॉपिक्स हैं तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इनके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह जाएंगे जो तुम्हें करने हैं. तो अपने मेन टॉपिक्स के साथ इन टॉपिक्स को एडिशनली अच्छे से करो. ओके, मतलब ये टॉपिक नहीं छूटने चाहिए. ओके, सो बेसिकली ये मेरा मतलब है इस वीडियो से. देन वी हैव कास्ट व्हेन वी हैव ग्लोमेरुलोपैथीज. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट देखे जाते हैं यूरिन में. ओके, एंड ग्लोमेरुलोपैथीज के एसोसिएशंस के साथ. ओके, इन लीवर बेसिक थिंग है सारी. cirrhosis सब basic है. Alcoholic liver disease stages and management. Now there are 3 different types of stages of alcoholic liver diseases. We should know about all the 3 managements of those stages. Cirrhosis में भी पता होना चाहिए. Cirrhosis का एक फार्माकोथेरेपी वाला जो पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस पर लोग बहुत कम नजर डालते हैं. तो आप वो देख लेना सरोसिस में जो हम ड्रग्स देते हैं, क्योंकि मोस्टली सरोसिस में हम जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, पर जो ड्रग पार्ट है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो देख लेना चाहिए. देन इफ वी कम टू हेपेटाइटिस, हमारे पास वायरल और ऑटोम्यून हेपेटाइटिस आ जाता है. वायरल में वी हैव हेपेटाइटिस बी एंड सी, वेयर एज ऑटोम्यून में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस है और उन सब में डिफरेंट पैथोलॉजीज हैं, तो वो भी अच्छे से पता होना चाहिए. देन वी हैव अ कार्सिनोमा, दैट इज हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा. द पैथोलॉजीज, द कॉजेज, द फैक्टर्स प्रिडिस्पोजिंग एचसीसी, द ट्रीटमेंट. ओके, इफ यू कैन यू शुड डू द ट्रीटमेंट टू इन द पैथोलॉजी एस्पेक्ट ओनली. देन इफ वी कम टू CNS पैथोलॉजी एस्पेक्ट से ज़्यादा नहीं है. Congenital malformations, we should know about the CNS. Then we should know about Alzheimer's and CNS tumors. So congenital malformations that we can see in CNS, we should know Alzheimer's, we should know CNS tumors. Then if we come to tumor, now I have individualized the tumor differently. अगर आप देखोगे तो सब में मैंने इतना डिस्कस नहीं करा है ट्यूमर्स को, क्योंकि मैंने इनको अलग से लिखा है. So let's start with the tumors. Now in tumors we have rhabdomyosarcoma, which is a serious tumor. We have BCC, SCC, melanoma, which is skin tumors. Then we have CA breast, CA thyroid, which are endocrine tumors. Then we have seminoma, which is genital tumor. Then we have granulocell tumor, which is also a genital tumor, but the female. Okay, so these are few tumors which are way more important than the others. Then if we come to diabetic nephropathy, now I have individualized the diabetic nephropathy from all of the topics in systemic pathology, because I know diabetic nephropathy is a must come topic of the NEET PG. Okay, and I am sure it will be covered in the NEET PG 2022 questionnaire. Okay, so I guess that's all from my side. Keep studying, keep doing MCQs. That's all I can say.